Hi everyone, hello students. How are you all? I hope that everyone is good and you guys are doing great. Yeah, let's start with today's video. Before starting, I hope that you guys already know that what I'm going to teach today. Basically, I'm going to teach you minimum spanning tree. Now, before starting with minimum spanning tree, let me tell you, like in this video, I'm going to tell you what a spanning tree is, how you can get a spanning tree from a graph, and then after basically a single graph has multiple spanning trees. So after seeing multiple spanning trees, we are going to see how we can like calculate or how we can understand that which one specifically is a minimum spanning tree. Okay, so let's just wait for students to come to join in, and then we'll start. In the meanwhile, you guys can tell me if my voice is clearly audible to all of you and if my screen is visible. Just quickly let me know if the screen is visible, and then I'll start with today's video. So I have already taught you guys this introduction to first step to DSA. In introduction to first step to DSA playlist, I have already taught you multiple things. Like we have started from basics of programming, and then we have covered multiple things like loops and then arrays and then other data structures also, like stacks, queues, linked lists. We have done multiple questions, multiple different implementations, and after doing trees, binary search trees, now we are doing graph. So in graph, we have already seen types of graph, basically the types of edges in graph, BFS, DFS in graph, and now we are starting with minimum spanning tree. Now after we'll be done with this video, I'm gonna teach you Prism algorithm and Dijkstra algorithm. Now for the implementation of Prism algorithm and Dijkstra algorithm, so yeah, for the implementation of Prim's algorithm and Dijkstra. No, not Dijkstra. Sorry, Dijkstra is used for shortest path. Okay. After we'll be done with Prim's algorithm and Kruskal algorithm, we are going to see how we can detect cycle in. Now this also we are going to see in two ways. One in directed graph, and another one is in undirected graph. So basically directed graph is the graph in which we have like direction, like if I'm going from node 1 to node 2, and if there is a arrow, like if there is the direction is from 1 to 2 only, the edge is from 1 to 2 only, then we can say that it is a directed graph. And if we have something like this, two vertices are connected like this, then we say that it is an undirected edge. Basically we can go from 1 to 2 and 2 to 1 as well. Okay, so now after a quick introduction, let's just quickly go to our slides. Okay, now let's talk first I will explain you whole thing with the example, and then we are going to see a definition, then we are going to see one like a really big graph and how you can calculate minimum spanning tree, like how you can get the minimum spanning tree of that graph, and then we are going to see some properties of spanning trees. Okay, so let me take a very small example. Just assume that this is the example. We have an undirected graph for now. Okay, so just assume that this is the graph. Okay, 1 2 3 4. Now I have to calculate the spanning trees. So first of all, what are spanning trees? Basically the spanning trees, this one is a graph, you know, we have a cycle in graph. Now spanning trees, number first condition that we don't have a cycle. We don't, because it's a tree, we don't have a cycle. Okay, now let's see how we can calculate spanning trees. Okay, what I'll do is I'll tell you whether I'll basically just give me a second, I'll explain you that also. Okay, so basically this is a spanning tree. Okay, so whenever we say that in a graph we have V vertex and E edges. Okay, now
just assume that G dash is a minimum spanning tree. So we'll be having V dash vertices and E dash edges. Now, what is the condition, like what is the relation between V dash and V and E dash and E? So basically in any spanning tree, V dash is equals to V. So वर्टेक्स जो हमारी होती हैं वो इक्वल होती हैं एक ग्राफ में, और मिनिमम उसके जितने भी स्पैनिंग ट्रीज होंगे उन सब में वर्टेक्स सेम होंगे, ठीक है, वर्टेक्स सेम होंगी. बट व्हाट इज द कंडीशन फॉर एजेस? द कंडीशन फॉर एजेस इज दैट ई डैश इज अ सबसेट ऑफ ई. Subset of E dash is a subset, basically subset. Okay, I have done belongs to. Just give me a second. Yeah, E dash is a subset of E. So the number of edges will always be less than the edges that we have in the main graph. Okay, there's a difference of edges in spanning trees. Now, one more thing that you have to remember is that the number of edges in a spanning tree is always equals to V dash minus 1, or you can say V minus 1. Okay, so edges will always be one less than vertex. So हमारी जितने भी vertex होंगी उससे एक कम हमारी edges होंगी किसी भी spanning tree में. Now if I'll say, okay, now if I will say that you have to tell the spanning tree, so there can be multiple spanning trees first of all. Okay, let me give some weights to this. Let me just give some weights to this whole thing. Okay, सारी edges को मैं weights दे देती हूँ. 1 2, like just assume 1 2 3 4 9. Okay, so ये हमारी edges हैं. Let me just change it. Okay, let me just change it. Okay, what I'm gonna do is यहाँ पे 2 दे देते हैं, यहाँ पे 3 दे देते हैं, यहाँ पे 5 दे देते हैं, यहाँ पे 7 दे देते हैं, यहाँ पे 9 दे देते हैं. Okay, so these are the weights of the edges, weights, or you can say cost of the edges. Okay, now when I will calculate the cost of this spanning tree, then it is like 3 9 2 5. ओके, सो कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? किसी भी ट्री के सारे एजेस का सम करके. ओके, जो भी कॉस्ट हमारी एजेस की हैं इनका सम करके. सो 3 + 9 इज 12, 12 + 2 इज 14, 14 + 5 इज 19. सो द कॉस्ट ऑफ दिस स्पैनिंग ट्री इज 19. लेट मी ट्राई एंड मेक अनदर स्पैनिंग ट्री. दूसरा स्पैनिंग ट्री बनाते हैं. ओके, लेट्स डू दिस थिंग लाइक इस तरीके से करते हैं. इस बार 1 5 4 3 2. So this is another spanning tree. अब again इसकी costs क्या है? 7 5 2 and 9. Let's just do the sum of this. Okay, इसका sum करते हैं students. So the sum will be 9 + 2 is 11, 11 + 5 is 16, 16 + 7 is okay, it's 23. Okay, it's 23. अगर मैं कुछ मिस्टेक करूँ तो मुझे बता देना. And I can see few students in the class. Guys, if you're there in the class, please do like just please talk and interact that way. It's just like more feasible and good for me to understand like कौन class में है and hi hello करके, and to know you guys better, and you can ask your doubts in the live chat also. Okay, so yes, so इस spanning tree की cost कितनी है? 23. इसकी 19. Now let me build a spanning tree which will be having a minimum cost. So minimum cost के लिए मुझे पता है कि कैसा बनेगा. I know that how I'm going to make a spanning tree with minimum cost. So let me make that, and I'm going to explain you how you can understand which one will be the spanning tree with minimum cost. Okay, so 3 7 5 2. Okay, 2. Now let's just add these. 7 + 3 is 10, 15, 17. So this spanning tree has cost 17. If you will compare these three, then you can say that in सब में minimum cost इस वाले की है, right? Minimum cost is this one. Okay, so here you can understand if this is the minimum cost, like or in all the spanning trees that we make, like all the spanning trees of this graph. I'm also going to tell you how much किसी भी graph की कितने spanning trees बन सकते हैं, how to calculate that. So there can be multiple spanning trees of this graph, but the minimum will be this, and how you are going to calculate that also I'm going to tell you in a bit. Okay, so in the meanwhile you guys can tell if you have understood the concept of spanning trees and minimum spanning trees. किसी भी ग्राफ में what are spanning trees and what is the minimum spanning trees, all the points that I have taught you till now, do you have any doubt in that? If you have any doubt, just quickly tell me in the live chat, otherwise I'll just move forward. Okay, now let's see by definition what is a minimum spanning tree. Okay,
A spanning tree of that graph is a subgraph that is a tree. So whenever you are going to make a spanning tree of a graph, that is called a subgraph, and this spanning tree is basically a tree. So there will be no cycle, no cycle. हमारी ग्राफ की सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि साइकिल होनी ही चाहिए. ओके, सारी नोड्स. ओके ना. ओके, सो कनेक्ट्स ऑल द वर्टिसेस टुगेदर. इन दिस ट्री, जो भी हम ये ट्री बनाएंगे, इसमें सारी वर्टिसेस जो होती हैं वो सब कनेक्टेड होंगी एक दूसरे से. सो बेसिकली कोई भी वर्टिक्स ऐसी नहीं होगी जो अलग छोड़ दी गई होगी हमने. ओके ओके ओके, आई कैन सी आदित्य राय हियर इन द क्लास. ओके, now let's see the next point. A single graph can have many different spanning trees. As I already told you that in a single graph there can be many different spanning trees. Okay, okay, now yes, let's see the next point. The next point is a minimum spanning tree or MST. So what is the MST or minimum spanning tree or minimum weight spanning trees for a weighted connected undirected graph in a spanning tree? So here are the three conditions कि सारी edges के weight होने चाहिए, तभी you can only calculate. Okay, all of them should be connected, सब connected होने चाहिए, सारे vertices connected होने चाहिए. Graph should be undirected graph should be undirected graph. Okay, the graph that you'll be using will be undirected, is a spanning tree with weight. Okay, just give me a second, guys. Yeah, so it will be undirected graph is a spanning tree with weight less than or equal to the weight of the every other spanning tree. So in the example, as I already told you, whenever you will be having a graph, inside that graph there will be multiple spanning trees. I already made multiple spanning trees and I explained you, right? There will be multiple spanning trees. Now from those multiple spanning trees, whichever spanning tree, जिस भी spanning tree का जो cost होगा, that will be really less. ओके, आदित्य आप कह रहे हो आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा. सी आदित्य, यू आर इन विच क्लास, लाइक व्हाट यू आर स्टडिंग राइट नाउ? कैन यू प्लीज टेल मी? व्हेनेवर लाइक बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता, तो जस्ट थिंक ऑफ द ड्रीम्स दैट यू हैव इन योर लाइफ. एवरी पर्सन हैज सम ड्रीम्स इन देयर लाइफ, राइट? लेट मी जस्ट गिव अ क्विक ज्ञान डिस्पाइट ऑफ दिस वॉट एवर आई एम टीचिंग. Whenever आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, just think of the dreams that you have. Once you will think of that, once you will write them down, that what you want in your life, you will automatically, and you will keep focus on your dream, whatever you want to become. You will automatically enjoy studying. Okay, always pursue a thing which you enjoy doing. Pursue a career which you enjoy doing. And when you will have when you will pursue any career जो पढ़ने में, जिसको करने में आपको मजा आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ेगा खुद को. ओके, कूल. या, सो लेट्स स्टार्ट. सो आई वाज सेइंग कि आपके जितने भी मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज हैं, उसमें से भी जिसका सम ऑफ वेट्स ऑफ एजेस, जितनी भी एजेस हैं उनके वेट्स का जो सम करोगे आप, वो मिनिमम होगा. Is minimum. That particular spanning tree is the minimum spanning tree. Okay, from all the other spanning trees that you have. Okay, और बच्चों अगर आप लोगों को और ज्ञान चाहिए थोड़ा सा फ्री का, तो you can tell me, like if you have, see this in these classes I'm here to teach you, but you still have any doubt, any problem in your like studies or anything, you can share it with me. We can discuss, like क्लास के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल के कैन डिस्कस. ओके, सो यू guys can write anything that you want in the chat and I'll be happy to discuss. I don't make like videos specifically how to focus on something, how to study for 5 hours, how to keep concentrated and all of that, how to stay distracted from your phones and all of that, but I'll be like happy to guide you if you have any problem. Okay, yeah. Okay, let's see the next point. The weight of a spanning tree is the sum of weights given to each edge of the spanning tree. So जो भी हमारा spanning tree होगा, उसका weight क्या होगा? सारी edges का sum. Okay, now let's just quickly see the example. हम एक बड़े से, okay, first of all let's see how many edges, कितनी edges होंगी एक spanning tree में. So as I already told you, if V is the number of vertex, excuse me guys, yeah, sorry, if V is the number of vertex, then the number of edges in V is the number of vertices, then
number of edges in spanning tree will be v minus 1. Okay, this is the condition, like this will always hold. Okay, now let's see how many okay, a minimum spanning tree has v minus 1 edges. Not only minimum spanning tree, all the spanning trees will have v minus 1 edges always, where v is the number of vertices in a given graph. Okay, v is the number of vertices in a given graph. Okay, cool. Now I'll explain you this thing with the help of a very big example, so stay focused in what I'm going to teach. Okay, usse pehle, if anyone has to say anything, any doubt, anything you want to say, just tell me in the live chat, because once I'll start explaining how to find the minimum spanning tree of this whole tree, this whole graph, then I will not break. Okay. Okay, Aditya, you're saying, ma'am, मुझे Flutter को अच्छे से सीखना है. See, Aditya, I don't know much about Flutter. I have never worked in that technology. But all I know is that if you want to learn any language, anything like that, like I know that Flutter is used for development and all of that. So if you want to learn anything, I'm going to post a video like really soon. मैं एक video post करूँगी जिसमें I'll be telling you how to learn web development, like what is the roadmap of web development, and I'm going to make some more videos like this. Some more videos like this, and उससे आपको help मिलेगी. बाकी I'm going to say that just learn few basics and start with projects. जो भी development की चीज़ें, if you want to learn anything in development, just see the basics, and once you are done with the basics, move to the project. जितना ज़्यादा आप project करोगे, उतना ज़्यादा आपकी habit में चीज़ें आएंगी, उतना ज़्यादा आप easily remember करोगे. And no, मेरी class में कोरोना नहीं है, it was just a sneeze. Okay, yeah. So let's start. Cool. So this is the graph that you can see on my screen, and अब हम इसका minimum spanning tree निकालेंगे. Before getting to the minimum spanning tree, there is one thing that I want you to know, that is that this graph contains 9 vertices. So you know that 0, 1 to like 0 to 8, there are 9 vertices. So जो भी हमारा minimum spanning tree हम बना रहे हैं, उसमें हमें पता है कि edges कितनी होंगी, v minus 1, which is 8. So that's why I know that the edges will be 8. We'll be having 8 edges in our minimum spanning tree. So the minimum spanning tree formed will have 9 minus 1, 8 edges. Okay, I hope that this thing is clear. Okay, now let's just see how we can make the minimum spanning tree of this graph. Okay, so what I'm going to do is, students, is हम क्या करेंगे, हम ना इसका weights पहले define कर लेते हैं. Okay, इसके weights यहाँ पे define नहीं है, so let me define the weights. Okay, so 2, 7, 3, 9, 1, again 2, 3, no 3, not 3, 4, let me make it 4, 5, 6 and 8. Okay, let's do this, let's do with this. Okay, I hope that this is okay. Now what we are going to do is, सबसे पहले जब भी आपको कोई ग्राफ दे रखा हो और आपको बोला हो कि इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाओ, I would advise you, what you should do is कि सबसे पहले सबसे कम जिसका वेट हो उस वर्टेक्स को आप कनेक्ट कर दो, उस वर्टेक्स को कनेक्ट करना चालू कर दो. तो सबसे कम वेट यहाँ पे हमें दिख रहा है 0 और 7 का. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू मेक 0 एंड आई एम गोइंग टू मेक 7 एंड इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एंड इसका वेट 1 है. ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड वन. सेकेंड क्या है हमारा, एक ये है एंड एक ये है, दोनों का वेट सेम है. So let's do this. 1, okay, and यहाँ पे हम 2 बना देंगे and इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे and it has weight as 2. ठीक है, ना मैंने इसको नहीं दिया कुछ, इसको भी 4 दे देते हैं. ओके, and इसको हम 3 दे देते हैं. ओके, now let's do one thing. Now we will move to the next point. Now हमने 2 का ये बना दिया, अब 2 का एक और बनाएंगे. So what I'm going to do is, यहाँ पे 3 बनाऊंगी मैं and 3 को मैं, okay wait, just give me a second. यहाँ पे हम 3 बनाएंगे and 3 को मैं 4 से कनेक्ट कर दूंगी, 4 से कनेक्ट कर दूंगी with weight 2. ओके, अब ये बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड सा लग रहा है बट हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. ओके ओके, नेक्स्ट इज 3. नाउ 3 के हमारे पास कौन कौन से हैं, 3 के हमारे पास कौन कौन से हैं, एजेस ये है एंड एनीथिंग एल्स, नो, ओके, नथिंग एल्स. कूल. सो विद ईच स्टेप हम हर स्टेप पे ये भी देखते जाएंगे कि हमारी साइकिल ना बने. ओके, एज वी विल मूव फॉरवर्ड, जैसे जैसे हम एक एज क्रिएट कर रहे हैं, हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है
विद द क्रिएशन ऑफ दैट एज कोई साइकिल क्रिएट ना हो हमारे ग्राफ में. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब हम ये वाली एज बनाते हैं, ये वाली एज बनाते हैं, एंड व्हेन वी विल मेक दिस एज वी विल सी कि कोई साइकिल क्रिएट ना हो. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे मैं 8 लिखूंगी. ओके, एंड इसको मैं 7 से कनेक्ट कर दूंगी एंड इट हैज वेट एज 3. ओके, कूल कूल. ना लेट्स मूव अहेड. अगेन दूसरी हमारी अगेन एज क्या है, ये 3 to 5 एंड इट हैज वेट एज 3 अगेन. सो आई एम गोइंग टू मेक दिस 5 and it has weight as 3. Okay, so yes, now let's move ahead. Next is 4. कौन कौन सी हमारी एजेस ऐसी हैं जिसका वेट 4 है? एक ये वाली एज है एंड एक ये वाली एज है, 1 to 7 एंड 6 to 5. लेट्स सी, जब भी हम कुछ भी क्रिएट करेंगे वी हैव टू ऑलवेज सी कि साइकिल ना बने. नाउ व्हेन आई वांट कि मैं 1 से 7 तक एज क्रिएट करूं, आई विल सी क्या इससे कोई साइकिल तो नहीं बन रही है. बट इफ आई विल सी दिस, अगर मैं ये कनेक्ट कर दूंगी तो यहाँ पे एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी. एंड किसी भी ट्री में साइकिल नहीं होती, मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज में साइकिल नहीं होती, तो वी आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट दिस एंड वी आर गोइंग टू मूव अहेड. ठीक है, हम यहाँ पे ये कनेक्शन नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट इज 6 to 8, 6 to 5. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, 6 यहाँ बनाया, 6 से 5 तक एज कनेक्ट करूंगी. क्या कोई साइकिल बन रही है? नहीं, कोई साइकिल नहीं बन रही है. सो आई विल कनेक्ट देम एंड मैं इसको वेट दे दूंगी 4. नेक्स्ट इज all the edges which have weight as 5. ठीक है, 5 कहाँ वेट है? ओके, here is 5. ओके, only one, एक ही जगह पे ऐसा, only one place we have weight as 5. so if I will connect 5 and 4 with the weight 5, क्या यहाँ पे एक साइकिल नहीं बन जाएगी? अगर मैं ये कनेक्शन कर दूंगी तो यहाँ पे एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी, राइट? इस तरीके की. एंड वी कैन नॉट डू दिस बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री. सो वी आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट दिस. ठीक है, हम ये कनेक्शन नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे. आगे नेक्स्ट विल बी ऑल द एजेस विच हैव वेट एज 6 ये ही है, एक यही है, 1 इज ऑल्सो डन, 6 यही है. एंड नाउ इफ आई विल कनेक्ट 2 and 3, एम आई गोइंग टू क्रिएट एनी साइकिल? क्या इसकी वजह से कोई साइकिल क्रिएट हो रही है? लेट्स कनेक्ट एंड सी. इसको कनेक्ट किया, इसको वेट दिया 6 एंड लेट्स सी इफ देयर इज एनी साइकिल. अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता या तो गलत हो रहा है, डू लेट मी नो. नो, इसको कनेक्ट करने से कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो रही, सो इट्स फाइन. नेक्स्ट इज 7. नेक्स्ट जो है हमारा 7. नाउ इफ आई विल कनेक्ट दिस 2 and 5, क्या यहाँ पे कोई साइकिल क्रिएट हो जाएगी? अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पे ये साइकिल नहीं क्रिएट हो जाएगी एक, राइट? सो वी कैन नॉट डू दिस, हम ये चीज नहीं कर सकते. सो वी विल जस्ट इग्नोर दिस. देन वी आर गोइंग टू गो ऑन नेक्स्ट नंबर विच इज 8. Now if I will connect 7 and 6, क्या यहाँ पे कोई साइकिल क्रिएट हो रही है? If I will connect 7 and 6, see 7 से 6, 6 से 5, 5 से 3, 3 से 2, 2 से 8, 8 से 7, एक साइकिल क्रिएट नहीं हो रही इस शेप में. So we can again not do this. ये भी साइकिल क्रिएट कर रहा है तो हम ये कनेक्शन नहीं कर सकते. Okay, next is 9. Now if I will connect 0 and 1, is there is going to become any cycle? क्या यहाँ पे कोई साइकिल बन रही है? अगर मैं 0 और 1 को कनेक्ट कर दूँ, 1 से 2, 2 से 8, 8 से 7, 7 से 0 एंड 0 से 1 अगेन, ये एक साइकिल क्रिएट हो रही है. तो अगेन हम ये कनेक्शन नहीं करेंगे. एंड आई गेस इफ वी आर डन विद ऑल द नंबर्स, देन वी हैव डन विद दिस मिनिमम स्पैनिंग ट्री. नाउ इफ यू विल सी दिस थिंग वेरी नाइसली, बहुत आप क्लोजली इसको ऑब्जर्व करोगे. जब हमने ये 8 वाला चेक किया, जब हमने ये 9 वाला चेक किया और जब हमने ये 7 वाला चेक किया, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं थी. ये हमने विदाउट एनी रीजन चेक किया. हाई गुड इवनिंग, आई हैव फॉरगेट योर नेम, आई गेस इट्स अमोल, राइट? सो हाई अमोल. सो 8, 7, 9 इस केस पे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, ये हमने एक्स्ट्रा चेक की. एंड यू ऑलवेज नो दैट जब भी हम अपने कंप्यूटर्स में कोई भी चीज कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ग्राफ. ये ग्राफ और भी बहुत बड़ा हो सकता था. देन उस केस में देयर माइट बी मेनी अननेसेसरी, बहुत सारे अननेसेसरी हम चेकिंग कर सकते हैं जो जिसकी जरूरत नहीं है. सो हियर इफ यू विल सी, हमारी एजेस कितनी, हमारी वर्टिसेस कितनी है? 9. तो हमारी एजेस कितनी होनी चाहिए? 8. ओके, सो यहाँ से हम एक कंडीशन लगा देंगे कि जब हमारी 8 एजेस क्रिएट हो गई, देन वी हैव टू गो. हाँ ओके, अनमोल, या राइट अनमोल. सो हमें बाहर आ जाना है लूप से. जब हमारी 8 एजेस क्रिएट हो जाएंगी तो हमें लूप से बाहर आ जाना है, बिकॉज वी नो दैट हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गया है. ओके, सो इफ यू विल सी, लेट्स काउंट द एजेस. 1,
2 3 4 5 6 7 8. So we have already made 8 edges. हमने 8 edges already create कर लिए हैं. That means this is the minimum spanning tree of this graph. Okay, now if I will say ask you, now your work is, यहाँ पे आपका काम है to see this carefully, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई और स्पैनिंग ट्री बन सकता है, कोई और स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन सकता है, तो यू कैन ट्राई. According to me, this is the minimum spanning tree that I have created. Okay, let me write it nicely over here. यहाँ मैं नाइसली बना देती हूँ इसको. ओके, नाइसली मैं यहाँ क्रिएट कर देती हूँ इसको. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस ग्राफ. नाउ इट्स योर वर्क. इफ यू थिंक लाइक कि यहाँ नहीं और भी कुछ हो सकता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, सो यू कैन ट्राई एंड मेक समथिंग. लाइक आपकी मर्जी, आप बना सकते हो. आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग. आप ट्राई कर सकते हो. 1 2 3 7 6 5 8. Okay, and 4. Oh, wait. Okay, yes, 4, and इधर 0. And according to me, this is the minimum spanning tree that of this graph. इस ग्राफ का minimum spanning tree यही है. Now you can try and make other spanning trees, और अगर आपको लगता है कोई और spanning tree बन सकता है, minimum spanning tree इसका बन सकता है, तो you can try it out and let me know if I'm wrong. Okay, okay. Now let's calculate the weight of this. Okay, 1 plus 3 4, 4 plus 2 6, 6 plus, okay, 6 plus 6 is 6 plus 6 is 12, 12 plus 3 is 15, 15 plus 4 is 19, 19 plus 2 is 21. and मैंने यहाँ पे weight देना भूल गई. so what I'm going to do is, इन दोनों edges का weight देना भूल गई. so again I will give this as 2 and this as 9. so yes, तो यहाँ पे हमारा इसका 2 हो जाएगा 23. basically this is the minimum spanning tree according to me. You guys can try and make other spanning trees also. और अगर आपको लगता है कि कोई और spanning tree, minimum spanning tree बन सकता है, तो do let me know. आप मुझे बता सकते हो. Cool. So any doubt in this? If anyone has any doubts, you guys can ask. अगर किसी को भी किसी भी तरीके का डाउट है तो आप पूछ सकते हो. Otherwise I should move ahead. I guess किसी को कोई डाउट नहीं है. Should I move ahead? If you have understood this, do let me know in the live chat. And अगर कोई डाउट है तो मुझसे वो भी पूछ लो. And I will move ahead. Okay. Now let's see some properties of minimum spanning tree. So number 1 is, if each edge has distinct weight, then there will be only one unique MST. Now अभी जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको बोला कि आप ट्राई करो कि क्या इसका कोई और MST पॉसिबल है. तो इन दैट केस यस, किसी एक ट्री के और भी MSTs पॉसिबल हो सकते हैं किसी एक ग्राफ के. मैम DSA इंपॉर्टेंट है, DSA बहुत इंपॉर्टेंट है आदित्य. इफ यू आर गोइंग टू सिट इन एनी कंपनी starting from TCS and Wipro and Accenture and Cognizant till Facebook, Microsoft, Amazon, Google, each and every company asks from DSA. and हर company के लिए DSA बहुत important है. If you don't have good knowledge of DSA, nothing will matter. आपने बहुत अच्छे अच्छे projects बना लिए हैं, but अगर आपको DSA पहला जो पेपर होता है, लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज में, कुछ कंपनीज में एप्टीट्यूड होता है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जो पहला पेपर होता है दैट इज कोडिंग एग्जाम. एंड उनके कोडिंग एग्जाम में देयर इज ऑलवेज क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रीज एंड ग्राफ्स एंड एरेज के होते हैं एंड स्ट्रिंग्स के होते हैं, पॉपुलर कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं उससे होते हैं, एंड लिंक लिस्ट होती हैं, लिंक लिस्ट होती है. सो ये सारे टॉपिक्स के से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं जो कोडिंग राउंड होता है. एंड ऑब्वियसली
क्योंकि ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके लिए डीएसए इंपॉर्टेंट हो ही गया एनी विच वेज. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि एमएसटी मैंने बोला कि और आप एमएसटी बना के दिखाओ. सो एक ग्राफ के मल्टीपल एमएसटीज भी हो सकते हैं. कंडीशन इज कि अगर एजेस के वेट्स डिस्टिंक्ट नहीं हुए तब. ओके, इफ एजेस डोंट हैव डिस्टिंक्ट वेट देन इन दैट केस एमएसटीज बन सकते हैं. सी, मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको. मान लो ये मेरा ग्राफ है जो मैं बना रही हूं. ओके, एंड यहां पे वेट्स हैं 2, 2, 1, 3, 4. ठीक है, ये मान लो हमारा ओके 4, 4. ओके, मान ये हमारा एक ग्राफ है. ओके, नाउ आई एम सेइंग कि इसके एमएसटीज बताओ. नाउ इफ आई टॉक अबाउट एमएसटीज ऑफ दिस ग्राफ देन 2, 1, 5, 4, 3. Just calculate the sum of sum of edges, like weights of edges. इसको calculate करो. 4 plus 3 is 7, 7 plus 2 is 9, and 9 plus 2 is 11. And if I'll make another MST, which is something like this: 1, 2, 3, 4, 5. Okay, no, sorry, 5. Okay, 2, 2, 4, 3. अगेन दिस इज 11. ये भी हमारा एमएसटी है, ये भी मेरा एमएसटी है. सो यहाँ पे द पॉइंट इज दैट अगर इफ ईच एज हैज डिस्टिंक्ट वेट, अगर सारी एजेस के डिफरेंट वेट्स हैं, देन इन दैट केस देयर विल बी ओनली वन एंड यूनिक एमएसटी. और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो देयर कैन बी यूनिक एमएसटीज, और देयर कैन बी मल्टीपल एमएसटीज ऑल्सो. Okay, I hope that this point is clear. Now let's see other points. Next point is adding one edge to ST will create a loop. अभी जो मैंने आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना के दिखाया, अगर मैं इसमें एक एज और कनेक्ट ऐड कर दूं ये वाली, तो क्या ये लूप नहीं क्रिएट हो जाएगा? सो ये वही है कि अगर आपने स्पैनिंग ट्रीज में एक एज ऐड कर दी तो 100% उसमें लूप क्रिएट हो ही जाएगा. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज रिमूविंग वन एज फ्रॉम स्पैनिंग ट्री विल मेक इट डिस्कनेक्टेड. नाउ लेट्स सी हाउ दिस इज पॉसिबल. सी, अगेन आई विल मेक द सेम स्पैनिंग ट्री. मैं सिंपल वाला बना रही हूँ बार बार आपके लिए, सो दैट ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो पॉइंट समझने में, बट दिस विल अप्लाई ऑल्सो फॉर द कंडीशंस जहाँ पे आपका डिफिकल्ट वाले ग्राफ्स होंगे. ठीक है ना, अगर मैं ये वाली एज हटा दूँ तो क्या ये दो डिफरेंट ट्रीज नहीं बन जाएंगे? ये तो बेसिकली ये तो और लिंक लिस्ट बन जाएगा एंड ये एक ट्री बन जाएगा. सो दिस पॉइंट इज दैट ओनली कि अगर आपने अपने स्पैनिंग ट्री में से एक भी एज हटा दी तो आपका ट्री जो है वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा. ओके, कूल. लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. So before seeing the next point, let me erase everything from the screen. Every connected and direct graph have at least one ST spanning tree. So जितने भी हमारे कनेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, जितने भी हमारे कनेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ है उनमें एटलीस्ट वह एक स्पैनिंग ट्री तो बनता ही बनता है. ओके, now let's see the next point. Disconnected graph does not have any spanning tree. So हम disconnected graph से कभी spanning tree नहीं बना सकते obviously, क्योंकि हमने ये बोला ही है कि अगर आपने अपनी spanning tree में से भी एक edge आपने गायब कर दी तो वो disconnected हो जाएगा and it will be no more a spanning tree. So similarly आपने अगर आपका graph disconnected है तो आप उसमें से spanning tree नहीं बना सकते. Okay, next is a complete undirected graph can have n raised to the power n minus 2 number of spanning trees. ठीक है, अगर आपके पास एक ग्राफ है और उसकी वर्टेक्स अगर आपकी n है, n can be 4, n can be 3, n can be 7, n can be anything. तो उसके number of spanning trees कितने होंगे? n raised to the power n minus 2. So let's try it with 3. So 3 raised to the power 3 minus 2 is 1, 3 raised to the power 1. So अगर मेरा कोई इस तरीके का ग्राफ है 1, 2, 3, ये 3 वर्टिसेस वाला ग्राफ है, so इसके 3 स्पैनिंग ट्रीज बनेंगे. One will be this. Okay, one will be this. And one will be
one will be like this. ठीक है, 3 बन गए. सो इसी तरीके से जितने भी हमारी एजेस हों, जितनी भी हमारी वर्टिस होंगी, उसकी कैसे हम निकालेंगे, कितने स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं, n⁻⁻². ये आप ध्यान रखना क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जा सकते हैं इसमें से. ओके, द लास्ट पॉइंट इज इफ वी रिमूव e−n+1 एजेस फ्रॉम अ कंप्लीट ग्राफ वी कैन कंस्ट्रक्ट स्पैनिंग ट्री. सो अगर हमारे पास एक ग्राफ है और उस ग्राफ में से हम e−n+1 एजेस हटा दें तो वो ग्राफ ऑटोमेटिकली स्पैनिंग ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, वो ग्राफ ऑटोमेटिकली स्पैनिंग ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल देखते हैं हम. मैं अगेन वो वाला एग्जाम्पल ले लेती हूँ. जस्ट गिव मी a second, let me erase it. Okay, let's assume that this is our graph 1 2 3 4 5. ठीक है, ये हमारा एक ग्राफ है. नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है, n कितना है 5. एजेस कितनी है 1 2 3 4 5. ठीक है, सो ओके, yeah, e is the edges and okay we can construct. Okay, so e−n 5+1. ठीक है ना, ये कितना हो गया 1 हो गया. 5 - 5 0 +1. अगर हम इस ग्राफ में से एक एज हटा दें तो हमारा ऑटोमेटिकली स्पैनिंग ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर मैं ये वाली एज हटा दूं तो स्पैनिंग ट्री बन जाएगा, राइट. अगर मैं इसको ना हटा के अगर मैं ये वाली एज हटा दूं तो ये स्पैनिंग ट्री बन जाएगा. सो ओके, सो वी कैन कैलकुलेट कि हमें एक ग्राफ में से कितनी एजेस हटानी है with the help of this formula e−n+1. Okay, yeah, so that's it for today's class. This is just an announcement again, like I'm just telling you for this coding wizard tournament. So if you are a school student or you have any of your siblings in school, they can participate in coding by wizard school coding school tournament, and it will have 22 questions. 2 questions will be coding questions and 20 will be the quiz questions, and they can win rewards up to 5 lakhs, and the link will be in the description box. I will be having one more class today that will be for the preparation of this coding wizard tournament. So I'll be telling you about this tournament in detail over there. So the live is from 5 p.m. to 6 p.m. So if you have any of your siblings from class 8th to 12th, and basically only the students from class 8 to 12 can participate in this tournament. So if you have any of your cousins or siblings in from 8 to 10, please ask them to participate in the tournament because they can win like a lot of goodies and rewards. And not only this, they can easily learn about, like they can learn for this tournament. They can learn from the playlist or from the live classes that I am taking from 5 p.m. to 6 p.m. daily. Okay, and the contest is on 26th of January. Okay, so that was all for today's class. I hope that you guys have enjoyed it, and I'll see you next time. Till then, take care. Bye bye everyone. Bye. And guys, please, if you like the video, please hit on the like button and share it with your friends. Okay, bye.